Hello students, in the previous lecture we have understand about the meaning, concept and the scope of e-business. Again we will understand once again the meaning of e-business. What is e-business? That is electronic business. Nowadays the new mantras of day is growth, globalization comes and the speed and competitiveness comes in the market. So every barriers will is removed and finally every person can purchase anything all around the world. That means it opens a new door for the customer around the world. So electronic business refers to the use of the web, internet, intranet, extranets or some other combinations for conducting the business. So now today we will understand the benefits and the disadvantages of e-businesses. First point, easy formation, ease of formation. It is very simple that e-business is easy to form. The online business can be set up at home but only if the necessary software, the internet and the device are available. That means we can easily set up this business at our home only. Next is lower investment requirements. Here for opening this type of online businesses, it is easily formation at our home also, through our mobile also. That means here we doesn't need to invest money for opening this type of business, like expenses for the infrastructure, for purchasing a shop, for decoration, for advertisement, for each and everything. So here this type of unnecessary expenses will reduce and it is easy to open this type of e-businesses, and also for opening there will be the low cost. So online business is more affordable as the cost required to set up a traditional business is much higher. जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसे ओपन करने के लिए जो उसका सेटअप है उसके लिए कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाती है. सो द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज़ लो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, as the store does not have a physical existence and can be managed with the less manpower without, और कम से कम हम एम्प्लॉयज़ के साथ हम इजीली अकेले ही अपने ऑनलाइन बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं और कहीं भी जाके हम अपने इस मोबाइल के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में हम अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इजी टू form and also start with the lower investment requirement. Next benefit is convenience. So it is very convenient, easily handled. It is very convenient. Why? Because first of all there is no need to go daily on their shop to clean our shop or pay the hire for the shop or any other मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट फॉर द शॉप. सो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है और कन्वीनियंट किस तरीके से है, ईजीली हम अपने घर पे बैठ के इस बिज़नेस को ओपन कर सकते हैं. दैट मीन्स इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7/365 डेज अ ईयर. एवरी टाइम ये इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू हम इस बिज़नेस को कन्वीनियंटली हैंडल कर सकते हैं. सो बिज़नेस इज़ गोइंग ऑन एनी टाइम and its flexibility is available. So e-business is truly a business that has enabled and enhanced by the electronic and offers the advantage of accessing anything, anywhere and anytime. कभी भी कहीं भी किसी भी समय पे हम अपने इस बिज़नेस को हैंडल easily कर सकते हैं by using the electronic devices. Next advantage is speed. स्पीड इन द सेंस बहुत ही ईजीली, स्पीडली हम जो चाहते हैं उसे हम ईजीली परचेस, सोल्ड कर सकते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. दिस बेनिफिट बिकम्स ऑल द मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू द इंफॉर्मेशन. More
Much of the buying or selling involves exchange of information that internet allows at a click of mouse. एक क्लिक करने पे हम इजीली किसी चीज़ प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं एंड विद इन सम डेज द प्रोडक्ट इज एट योर इन योर हैंड. दैट मीन्स अ सिंगल क्लिक पे हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं. ऑनलाइन पेमेंट्स हम इजीली कर पाते हैं विद इन अ सेकेंड्स. स्पीडली ये इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हम ये ई बिज़नेस को कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज इज ग्लोबल एक्सेस. एज आई टोल्ड यू दैट ऑल द जोग्राफिकल बैरियर्स वर रिमूव्ड. दैट मीन्स इंटरनेट ट्रूली विदाउट द बाउंड्रीज. जो इंटरनेट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है. ईजीली हम अब्रॉड में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ भी डीलिंग्स कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट मीन्स देर विल बी नो जोग्राफिकल बैरियर्स in the e-business as anyone can buy anything from anywhere at any given time. So it is very beneficial for everyone if we are using this type of businesses. Now the next one is movement towards a paperless society. सबसे पहले हम अगर किसी शॉप पे जाते थे देन वी विल टेक द रेसिप्ट and also the shopkeeper is a responsibility to print out the book for receipt book, that is, and completely handwritten and give the receipt, and this receipt book is kept with the businessman and finally they will go for the audit. That means यहाँ पर जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं ऑनलाइन बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में वो लेस हो गई है बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑन द कंप्यूटर एंड एवरी रिकॉर्ड इज़ मेंटेन इन द कंप्यूटर विद इन अ मिनट्स. So the use of internet has considerably reduced the dependence on the paperwork. Everything is on the computers. Thus recording and referencing of information has become very easy. Now the next advantage is government support. Now here government is also provide some favorable environment for setting up of e-business. Why? Because globalization is a very good idea and in which the development of every businesses is also comes up with the coming possibilities or the competitions. तो यहाँ पे definitely government काफ़ी सपोर्ट करते हैं एंड दिस सपोर्ट्स इंश्योर्स मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसीज. दैट मीन्स बिजनेसेस ई बिजनेसेस everything should be transparency with the government. So business or online businesses receives advantages from the government as they promote digitization. जो डिजिटाइजेशन है उसे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट विल ऑलवेज सपोर्ट. easy payment. Last one is the easy payment. The payment in e-business is done by the credit card, fund transfer and is available round the clock. Easily हम अपने घर पर बैठे हुए हम अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे easily हम अपना फंड कहीं से भी कहीं पर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं with the help of e-businesses. So these are the advantages of e-business. Now the next one is limitations of e-business. जैसे हम बोलते हैं कि हर एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं वैसे ही ई बिजनेसेस के जितने एडवांटेजेस है बेनिफिट्स हैं उतने ही डिसएडवांटेजेस भी हैं. अगर हम उसका ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो मे बी पॉसिबल उससे हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं. So e-business does have certain disadvantages when compared to the traditional way of doing business. If you are comparing this e-business with the traditional business, then here e-business also faces so many disadvantages. Like first one is lack of personal touch. अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम किसी मटेरियल को, साड़ीज़, ड्रेस या किसी भी प्रोडक्ट को हम छू कर उसकी क्वालिटी को प्रॉपरली देख पाते हैं. लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन शॉपिंग में हम उस प्रोडक्ट को फील नहीं कर पाते, उसके मटेरियल को चेक नहीं कर पाते हैं.
तो यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज है. दैट मीन्स हियर इट फेसेस customers have faces that type of problem. There is no personal touch and the customer cannot feel and touch the product while buying. So this make it difficult for the consumers. So e-business lacks the personal touch. One cannot touch or feel the product. So it is very difficult for the consumers to check the quality of the product. Next one is delivery time. ऐसा बोला जाता है within some time the product is at your home, at your door, but sometimes it will not happens. But in the traditional business, directly we will go to the shop and buy the product as soon as we would like to need that product. But here we have to spend some time or wait for the time for getting that product. So this is comes under in the disadvantage that comes in the delivery time. The delivery of the products takes time. In traditional business, you get the product as soon as you buy it, but that doesn't happen in the online business. Online business में ऐसा possible नहीं होता. We have to wait for some days, and this time lag often discourage customers. For example, Amazon now ensures one-day delivery, but this is an improvement but does not resolve the issue completely. Sometime जो भी प्रोडक्ट है वो आते आते डैमेज भी हो जाता है and we are just waiting for the eagerly waiting for the product, but the products becomes a damage and that product will not satisfy our needs. So finally we will use the traditional businesses. Now the third one, which is the most badly disadvantage and the main disadvantage of the e-business, that is security issue. When we comes to the online shopping, e-business site stores customers' data that include credit card information, okay, bank account details, and also personal identifying information without proper security measures in the place. These sites are at risk of losing consumers' data. So here fraudsters are becoming the smarter as technology advances. बहुत ज़्यादा जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतने ज़्यादा वो भी अपने माइंड से ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं. जस्ट लाइक अ न्यू टेक्नोलॉजी, किस तरीके से कस्टमर्स के सारे डिटेल्स को हम फ्रॉड के रूप में लेके उनके साथ में स्कैम कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे इश्यूज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन बिजनेसेस में सफ़र करते हैं कंज्यूमर. आप सभी लोग इस बारे में सुनते ही होंगे. सो दिस इज ऑल्सो कॉजेज डिस्टर्बेंस अमंग द पोटेंशियल कंज्यूमर्स. नाउ द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. सिमिलरली गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करती है डिजिटाइजेशन को उतना ही उनका इंटरफेरेंस भी, मॉनिटरिंग भी काफ़ी रहता है. समटाइम्स द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस in the business. So many government interventions which affects e-business like political pressure, impact of personal freedom, etc. So here government also interfere in the e-businesses and which converts into the problem for electronic businesses. Now the last disadvantage is high risk. When we are purchasing the product, definitely we take some risk by giving our complete details with our name, contact number, credit card details, and finally we will pay the amount. But with that amount, the hackers will take all the informations and scam our, hackers will hack our account also. So here we are taking the high risk which is comes under in the two parties. So in this case fraud becomes difficult to take the legal action. यहाँ पे हम फाइन भी नहीं कर पाते कि who is the actual culprit, कौन है यहाँ पे fraud. तो ये it is very difficult to find the exact person who is doing that fraud. So businessmen are targeted by the means of fraud which include false credit card transactions, take returns,
identity theft, etc. Fake returns, identity theft. So these types of problems faces in the electronic businesses. So here complete the finally concept of e-business.